हाउ टू रोटेट वीडियो इन VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर में वीडियो को रोटेट किस तरह से करना है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मिनिमाइज करना होगा एंड सेलेक्ट योर दैट वीडियोज विच आर रोटेटेड। सो आई सेलेक्ट दिस वीडियो हाउ टू, यू कैन सी दिस वीडियो आर हाउ टू क्रॉप वीडियो इन VLC। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वाला वीडियो जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि रोटेट करूँ और इसे 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ, और ये हाउ टू उल्टा 90 डिग्री पर रोटेट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये किस तरह से हमें करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर उस वीडियो को आप ओपन करिए, देन ओपन विथ VLC, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी वीडियो आर प्लेड। देन क्लिक ऑन टूल्स, click on effects and filters. You can see here the pop-up window and click on video effects, then click on geometry, then click on interactive zoom or click on transform। ओके, और ट्रांसफर पर क्लिक करते ही ये आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये वीडियो जो है 90 डिग्री के साथ रोटेट हो गया है। यू कैन रोटेट दिस बाई दिस, you can rotate any angle of this video. I rotate this video at this angle, so I choose here flip transpose, anti-transpose, rotate it by 90 degree, choose this and rotate by 180, no, rotate by, flip horizontally, flip vertically, no, so this is very much, and click on this, I want to this rotate, how to crop video in rotate this side, and also I click this button and you can see how to crop video in VLC this side. Then click on save, then click on close. You can see the videos are rotated in this side. Then click on tools, then click on preferences, then click on all, then click on go down and click on this and click on, then go on a stream output and click on outer stream, this option, then choose in this option transport, then go down and you can see here video filter option, then click on video transformation filter, so choose this and click on save button. So the videos are cropped and rotated. Then click on media file and then click on convert and save. So select the video which are rotated, so click on this and I want to, तो वीडियो यहाँ पर VLC में प्ले है, उसी वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं हाउ टू वीडियो को सेलेक्ट किया था एंड देन क्लिक ऑन पेन, so the videos are selected and here click on convert, then click on here and select the video quality and type, so I select this MP4, then click on the browse and select the media जहाँ पर मीडिया को सेव करना है एंड फाइल नाम रखना है, तो आई राइट रोटेट वीडियो PID वीडियो। ठीक है, मैं रोटेट वीडियो इसका नाम रखा हूँ, देन क्लिक ऑन एंड डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर पहले से 2 वीडियो है, जो कि ये मेन सोर्स है, ये क्रॉप किया था इसका वीडियो, पुराना पीछे वाला वीडियो में है। तो हाउ टू वाला को हमने रोटेट किया है, देन यू क्लिक ऑन सेव एंड
आप देख सकते हो मुझे ऐसा ही रोटेट करना है, तो इसलिए मैं वीडियो को ऐसा ही रोटेट किया हूँ। ठीक है, देन क्लिक ऑन ब्रोज, वीडियो का नाम यहाँ पर हमने सेव कर लिया है। देन क्लिक ऑन स्टार्ट and wait here, and you can see here the process has been started. Then click on this, the process has been started, you can see here, and wait here, then click on await, still wait। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। देन ये प्रोसेस हो गया है। देन क्लिक ऑन टूल्स, एंड सभी वीडियो पर आपको ये जो रोटेशन है नहीं चाहिए, तो इसका इफेक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर से आप रिसेट प्रेफरेंसेस कर सकते हो। अन्यथा जितने भी वीडियो आप इससे प्ले करेंगे सारे को रोटेट ही कर देगा। इसमें सभी पे इफेक्ट नहीं डालने के लिए इसे हम रिसेट प्रेफरेंसेस कर देंगे। ठीक है, तो क्लिक ऑन रिसेट प्रेफरेंसेस, click on this, okay, then close this window, and you can see here the rotate videos are available in this, and I open this video, then you can see here close down, continue, and this is the video, you can see here ये rotate हो चुका है वीडियो। how to crop video in VLC, so this is the way of rotate the video in the VLC player। So thanks for watching this video, and don't forget to subscribe this channel and like, share and comment on this video.